तो यार आप सभी का स्वागत है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के पार्ट नंबर 32 के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम सारी साइड क्वेस्ट वगैरह करेंगे जो फ्रेया के साथ हम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी I can hold गड़बड़ on to के। those crests from Vanaheim, if you don't mind. अगर मैं सही हूँ तो वो जगह थी बिल्कुल वहाँ सामने। Freya, there's something I've always wanted to ask. What was it Hrimthur whispered to you? Who? Hrimthur, the son of Thormur, the stonemason, who disguised himself and built Asgard's wall. Oh, yes. One of the many occasions Odin saw fit to involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. What wager? I've told this story, brother. And now she may tell her own. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the bet. A mysterious mason had to build the entire wall in 3 turns of the season. 2! It was 2! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half-drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. So, off I went, not knowing what had truly been promised or expected. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise. His name was Hrimthur. He just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. I pointed out I was Aesir now too, technically. He gave me a look, as if he somehow knew better, and continued. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard Realm Tower. I knew it! How do we make use of it? We don't. He said Surtur would know what to do. And if Surtur's approaching Asgard's wall... Then it is already Ragnarok. Aye. Blast it. I hoped it might have given us another way. ओके सो बेसिकली क्या किया, सर्टर ही वो एसगार्ड की वॉल की एसगार्ड के टावर के पीछे सर्टर कर सकते हैं जो करना है, जिससे सारे के सारे एसगार्ड गिर जाएगा। शायद वॉल्स सारे एसगार्ड के ऊपर गिर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। खैर जो भी हो देखते हैं, करते हैं। हेलो Now, the word. Mecking. Success. The gate is lowering out there. ओके सो उस गेट के पास चलते हैं अब हम। Mimir, I never asked how it felt to lose your head. What would you have me say? That it tickled? Merely curious. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true, didn't you, brother? I felt nary a scratch. Shame. बस यही था, मुझे लगा कुछ और होगा यहाँ पे। आगे और कुछ नहीं। Freya, something your brother said. The Aesir burned him. Yes. We weren't yet at war, but relations with the Vanir and Aesir had been hostile for ages. Freyr got it into his head that he could improve relations by sharing our magic with them. Vanir techniques for bountiful harvests, enough to feed their whole population. Getting set on fire was the thanks he got. It's true. The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir spellcraft. So when things went wrong, they
blamed their teacher. So Freya was a guest when Odin burned him. Not exactly. Odin didn't mind locking Freya up. He saw the potential of the magic and wanted to know more than how to improve crop yields. It was a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted, who tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage they imagined him guilty of. Obviously, he survived. In fact, he used the opportunity to escape. But such an affront made war inevitable. Freyr certainly wasn't the same after that. At least for a while. His carefree ways were replaced with nightmares, paranoia, and lashing out. It doesn't excuse what he said at my wedding, but I do understand where his anger came from. ये कुछ करना पड़ेगा इन गेम डेवलपर्स को। अगर हम पीछे से जा रहे तो हम कर सकते हैं भाई लैंडिंग। एक बार ट्राई करते हैं कि क्या पता यहाँ कुछ कर सके हम अभी। We don't have the equipment for this. ठीक है, अभी नहीं कर सकते। वापस चलते हैं। लिटरली बस एक ड्यू ऑफ लक मिला था हमें बस एक इस पूरे एरिया में। यहाँ पे मुझे एक रैल्म टियर दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, एक बार मैप में चेक करते हैं इस एरिया को। एल्बरिक आइलैंड, यहाँ पे अगर हम देखा जाए एक लेजेंडरी चेस्ट, एक लोर, 2 ओडिन्स रेवंस, उसका रैल्म टियर्स भी होगा इसके अंदर। ये हो चुका है, ये हो चुका है। यहाँ भी हम कुछ नहीं कर सकते इन जगहों पे। Do you regret it, Mimir? Most likely. What are we talking about in particular? Giving up your body? I regret exchanging my life for my freedom? That's a question I ask myself every day, my lady. What about today? Today? Glad to be out in the world. How else could I spend such quality time with you? Okay, okay. ओके, सो अब हमें कहाँ जाना है? यहाँ पे। नेक्स्ट एरिया चलते हैं। स्वार्टलफाइम में भी हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है, सो अभी है योटनहाइम, मुस्पेलहाइम। एक सेकेंड, मुस्पेलहाइम का हमें कब मिला? ये क्या है? ओह, मुझे नहीं पता था इसके अंदर ये पूरा कुछ है। लगता है अभी हम नहीं कर सकते मुस्पेलहाइम में ट्रैवल। अजीब है, लेकिन शायद सिर्फ क्रेटोस नहीं कर सकता, एट्रियस कर सकता है शायद। हेलहाइम, लेकिन मुझे जानना है कि हमें दूसरा पोर्शन कब मिला था इसका। हेलहाइम अभी नहीं कर सकते हम। निफलहाइम एक बार चलते हैं, वहाँ पे हमें सामान मिलेगा। I can forge some new stuff. Seems like you might need the help. What is this? Ravens. The ones we've been destroying. Odin's little spies. Like the father of all, we swung from the tree. Wisdom gained father, servitude gained we. Swung from the tree. What do you suppose that means? And here I thought you were good with riddles.
मुझे लगता है ये शायद एक ड्रिसल की बात हो रही है कि ये शायद रेवंस पहले एक ड्रिसल के पार्ट थे, उसके बाद फिर ओडिन ने इनको पकड़ लिया, उसके बाद मरने के बाद ये यहाँ पे निफलहाइम में आए जहाँ पे उनको आज़ादी मिली, ऐसा कुछ। In life we hanged, in death we kneeled, until you freed us with your steel. So destroying the ravens free their spirits somehow. Good to know. Free. Well, free of Odin's control anyway. ओके, सो निफलहाइम के अंदर रेवन ट्री का वो है और ट्री ऑफ वो। ओके, ये क्या है? निफलहाइम चैलेंज। ठीक है, अभी हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट एरिया खुलेगा इसमें। I'll take those elven figurines, unless you got attached to them. एल्फहाइम में जाके मैं एक बार कुछ चेक करना चाहूँगा कि इस एरिया के अंदर मैं एक्सेस मिलेगा कि नहीं। अभी इस एरिया का मैं भूल चुका हूँ कि इसका एक्सेस मिलेगा कैसे। सो यहाँ चलते हैं। Alfheim? What's there? We still have unfinished business there. We found a Hofgufa out in the Barrens, milady. In terrible pain. We freed it, but there's another intern somewhere beneath the Forbidden Sands. A Hofgufa? I haven't seen one since I was a child. And what else? There's still that secret elven library in Alfheim. Lead the way. I've expanded my inventory since we last spoke. बेचारा अपना सिंड्री पिटता ही रहता है हर जगह। ओके, सो अगर देखा जाए बैरन्स के अंदर 2 अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि ये है सीक्रेट ऑफ द सैंड्स, वो मेरे ख्याल से हाफ गुफा है। और यहाँ पे कुछ क्या क्या चीज़ें हैं। चलते हैं फिर यहाँ पे आगे। Freya, I've always wondered, why was Freya so revered here so quickly upon his first arrival? Well, to begin with, it wasn't his first arrival. Very few know this, but Freyr was one of the earliest visitors to Alfheim, back in the dawn of realm travel. Oh, bit before my time. Do tell. We believed for a long time that all the giants had died in the flood, until one of them appeared in Vanaheim. Her name was Gerd, and she came offering to teach us the secrets of traveling between realms using Bifrost light. Freyr became immediately infatuated with her. He always yearned to wander, and along came someone who could truly show him how. Wait. Let us look this way. Much of the sand has been cleared away, but another storm rages beyond that pass, which must mean... Another Hofgufa. स्टोरी कंटिन्यू कर रहे कि नहीं है लोग? यहाँ पे कुछ चीज़ें इतने वो ले लेते हैं, क्या पता स्टोरी वापस कंटिन्यू हो जाए। There, getting back to your brother learning to realm travel. You said he fell in love with his teacher. Yes, Gerd. Someone he could wander with as never before. So, wander they did, exploring the world tree from root to branch. But one day, it came time for Gerd to wander away. Freyr was heartbroken, and resolved himself to perform some great feat to win her back. He set his aim on the grandest of gestures. He intended to be the first to find the elusive source of Bifrost light. Set that aside for now. Come. अरे यार, ये बार बार क्यों होता है ऐसा?
कुछ भी कहो, इस बार स्टोरीज ज़्यादा लंबी है, छोटी मोटी स्टोरीज नहीं है, एक आध Yeah, मुझे लगता returning to है। the story of your brother, you said he made it his mission to find the source of Bifrost's light. He did indeed. And he succeeded, although quite by accident. Freyr believed he navigated best while fortified by a potent blend of Vanir herbs. When he wandered, he wandered. And he managed to wander from the World Tree directly into the Lake of Souls. The elves have never seen anybody come out of the lake before, so it got some attention. Oh, that is bloody hilarious. I don't know whether he worked his charms at that point or they just assumed him to be a great deity. But of course, he hadn't made this journey in search of responsibility, so he didn't stick around long. Still, the legend of his manifestation was passed along through the ages. It even endured after the Great Division, remembered by light and dark elf alike. So when at last he returned, he was uniquely situated to gain the trust of both sides and help to create a truce. The problem was, both sides trusted only him. So the peace could only last as long as he stayed around to keep it. And with the long war dragging on without an end in sight, I suppose making any kind of peace was an irresistible notion for him. Even if it meant having to rule. ओके, फाइनली स्टोरी हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं और केक को खोलते हैं। Odd. It looks as though the Light Elves sealed off this section of the Barrens. Why? Luckily for us, a very considerate goddess has enhanced our magic chisel, and we can unseal it. My, that is lucky. The forbidden sands lay beyond. Contested territory, according to Bela, and another storm to endure. दी जारता या हजारता, जो भी नाम है, ये पूरा नया एरिया। मैप में देखते हैं अगर, तो हाँ, ये नेक्स्ट एरिया यहाँ से शुरू होगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे, दो अनडिस्कवर्ड है, मुझे आइडिया नहीं है क्या अनडिस्कवर्ड है। दो पॉसिबिलिटीज़, यहाँ तो कोई यहाँ पे कोई क्वेस्ट लाइन होने वाली है जिसकी वजह से कोई एरिया भी एक्सेसिबल नहीं है, या फिर मुझे एक बार दोबारा से पूरा एरिया चेक करना पड़ेगा। लेकिन वो मैं नेक्स्ट मतलब रिकॉर्ड नहीं करूँगा उसको मैं, लेकिन जब मैं एक बार सर्च करूँगा उससे आगे काफ़ी क्या क्या रहता है। I remember when Freya and I traveled to this realm as children. The desert was healthy and full of life back then. I can't help but fear that era has ended for good and our efforts here are futile. It's a fair concern. Healing this land will take more than a pair of singing half-goofa. But I have to believe in the long run, we're doing right by Alfheim. ओके, सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, बाय चांस कुछ यहाँ पे छुपा हुआ हो तो। ओके, इस एरिया का नाम है द फॉरबिडन सैंड्स। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बची है अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे क्या है, हाँ, हजारता में कुछ नहीं है, ठीक है। अल्फाइम में बस एक ही डॉगर होल था। इसका मतलब ये है कि हर एक रैल्म के अंदर एक डॉगर होल है, सो टोटल 6 रैल्म्स के अंदर 6 डॉगर होल्स होंगे, ये समझ में आता है मुझे। बरीड ट्रेजर, Well, best we start looking for a way underground. Keep a lookout for a cave!
ओके, सॉन्ग ऑफ द सैंड्स दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। हमें जाने इस साइड। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक बार मैप में मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है क्या क्या और जाना कहाँ पर है। सो एक बार गोल्स पे चलते हैं। फेवर्स, ओह सो डेजर्ट के अंदर ही है फॉरबिडन नॉलेज एल्वन सैंक्टम। ओके, अच्छा हम गलत जगह कर रहे हैं, सॉरी। हमें जाना है फॉरबिडन सैंक्टम यहाँ पर है और हाफ गुफा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे गोल्डन टीयर है। I see an entrance. यहाँ से I hope Freyr will appreciate our work here in the desert. I wonder if he knows how poorly this realm has fared in his absence. Aye. Hearing the Song of the Sands again is a rare privilege, even if it's only a solo act. Or a duet, once this Hofgufa is free. 10 मिनट है हमारे पास, कोशिश करते हैं इस पूरे एरिया को 10 मिनट में कंप्लीट करने की। सो अभी हमें करना ही है। This architecture. दी It is not बैरोज, of the Dark Elves. An abandoned ancient settlement by the looks of it. Built long before the Lightwell's creation. More hive matter as well. I'd say we're on the right track then. यहाँ पे 2 लेजेंडरी चेस्ट है, एक लोर एक आर्टिफैक्ट है। ये देखने में मेन एरिया लग रहा है, तो ये साइड एरिया होगा। ये क्या सीन है? लगता है कोई शॉर्टकट है जो बाद में खुलेगा। हाँ लगता है शॉर्टकट है। यहाँ कोई ओडिन इवेंट तो मुझे लगती ही नहीं हमें मिलेगी, क्योंकि मैप में तो नहीं है। वहाँ से ऊपर जा सकते हैं हम। यहाँ से नीचे जा सकते हैं हम। ओके, एक चेस्ट। ओके, ये क्या चीज़ है? This kind of hive material is sensitive to sound. How odd. फायदा क्या होगा लेकिन? बाद में पता चलेगा। When I last came here with you and Atreus, I assumed the absence of Alfheim's light was an aberration. I didn't realize it was covered by hive matter. Aye. And as far as the Dark Elves are concerned, it's that light column in the center of the temple that's the aberration. Just look at how old some of these surfaces are.
Far older than the Lightwell, or even our trapped Halfgiffer for that matter. That's quite the empathetic perspective, Mimir. Well, dangle from a burly god's backside for a few winters, and you'll find yourself looking for all sorts of new perspectives. ओके देखा जाए मिमिर और उसकी फ्रेया की काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती रहती है। ये देखो वहाँ पे फ्रेया है, यहाँ पे अगर नीचे पहुँचने हमें, सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे नहीं जा सकते क्या? अजीब है। हेलो मैं भी यहाँ से ही नीचे जाए? नहीं। मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्किप मार दी। जैसे कि मैं चाहूँ अगर तो यहाँ से कूद के ले सकता हूँ उसको, लेकिन हम नहीं ले पाएंगे फिलहाल। More hive, but denser. Too thick for that. Maybe the Twilight Stone on the ground will help. ओह समझ गया। Done. Well, there you go. यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं? Wretch on the left! कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये ऊपर नीचे क्यों कर रही है? अच्छा यहाँ पर है। Cover! The wee bastard's about to explode! Enemy behind you, Kratos! और भी हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई वो है। हाँ ये रहा। Enemies on the left! Behind you, brother! डन। ओके अब वापस चलते हैं थोड़ा। मुझे रियलाइज नहीं हुआ हमारी हेल्थ कम है इस टाइम पे। कहाँ पर है? भरे पड़े हैं यहाँ पे। ये क्या? यही कहीं निकलेगा। ये रहा। और कहाँ पे एनिमीज? यहाँ पे एक है शायद। ये रहा। फ्लोर मिल गई मुझे। Light elves. Nicely done. ठीक है बाय बाय।
castle. Light elves don't often travel underneath the barrens, do they? Territory changes hands often in Alfheim, or so it appears. Big Veer did mention that these ruins have historical significance for the Light Elves. I assume they're only here to keep intruders out. Well, at least they tried. ये बात तो है. I suspect the corpse below would disagree. ओके और एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ बाय चांस कुछ रह गया हो. यहाँ से तो हम आए थे. मैप के हिसाब से अभी 2 लेजेंडरी चेस्ट और एक आर्टिफैक्ट बचे हैं. एक सेकेंड रुको. हेल्थ हमें ज़्यादा चाहिए इस टाइम पे. यहीं कहीं एक क्रिस्टल होगा जिसके थ्रू हम इसको ख़त्म कर सकते हैं. मे बी ऊपर से हमें करना है शॉट. वो देखो वहाँ कैसे. उसके बाद डन. ओके सम ड्वार्वन स्टील. और क्या क्या यहाँ पे. यहाँ पे भी कुछ वही करना है हमें. मे भी पहले हमें ये करना है. सॉरी. और फिर ये मारना है. Good eye. Let's continue, shall we? ओके सो हाँ वहाँ क्रिस्टल था पीछे. दिख ही नहीं रहा था सही से. आगे बढ़ते हैं. और यहाँ लिटरली एक टॉर्च ऐसी रखी हुई है नीचे. और कहते हैं यहाँ पे ऑप्शंस वाइज. ओ यहाँ पे कुछ है और यहीं पे एक एरिया. ठीक है फिर इसके आगे करेंगे अगली वीडियो के अंदर. पहले लड़ाई कर लेते हैं. ठीक है. उप्स ये रहा. ये मुझे देखना है. सो था हमें जैकपॉट. पॉट्स ब्रोकन. हम ऑलरेडी 300 पॉट्स ब्रोक तोड़ चुके हैं इस पूरे गेम के अंदर. और अगर देखा जाए बस 200 और बचे हैं. Enemy behind you!
मैं भूल जाता हूँ रैंक शिफ्ट भी हम कर सकते हैं। उप्स। अरे यार ये नासी रहेगा फिर। I hope freeing these half-goofers will allow them to breed again. It was a dazzling display once. The skies of Alfheim filled with their song. I imagine it's the lack of fresh light that's caused this pair to grow abnormally large. No use in having babies if there's nothing for them to feed on. Trying to protect their children from a harsh world. I can relate. तो ऐसी के साथ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहूँगा अपने चैनल पे, तुम भी उन्हें ज़रूर चेकआउट करते रहना। और बाय चांस अगर तुम्हें मेरा चैनल पसंद आए तो उसका जगह शेयर करो, उसको आगे की तरफ फैला दो। तब तक के लिए इतना ही। सायोनारा।